Okay. So what is the purpose of doing these courses? So basically, my interest from high school started developing in numbers and figures. So basically, I was having two options, mathematics and statistics. So I chose statistics because of theoretical nature of mathematics. And with statistics, I also pursued economics course. So after completing my graduation, currently I'm pursuing economics masters. Okay. That's according to my. And what are you doing in field of competitive examinations? So in field of competitive examination, I'm giving various government examinations like SSC. Even I gave some banking. I gave CAPF examination also, and even UPSC CSC also. UPSC, CSC. So what is the status of every examination? If, have you got any position there or not? No, sir, I haven't been selected yet. Okay. No way. So if I put two joining letter at table at the same time, one of UPSC, IPS and one of IBACIU, what will you choose at the time? So it will be a tough choice. Like I have been vying for both the jobs from long time, but if I see it's like a promotion, if I get IPS, it's just the promotion from IB. So maybe, sir, I will have to choose. Okay. I'm not sure yet, but it's like a tough choice. Okay. अगर आपका IB में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप तब आप क्या करोगे? So basically, I have tried my best in this attempt. I have been studying super hard since the prelims and then the mains I gave. So I think, sir, I will be able to qualify, sir. I don't think the negative side. Okay. और अगर आपका IB में हो जाता है और फिर उसके बाद UPSC भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं एक साल बाद, तब आप क्या थिंकिंग रखेंगे, क्या आप चॉइस करेंगे? So basically, if I get into IB before UPSC, then most probably I will just continue with my job with IB, because if I work hard in this field, basically I will reach UPSC very soon, so at the level. So basically, if I am selected in IB, I will not. I cannot answer it right now. I'm not having these options in my mind. ओके, अभी आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं, फिर भी एक बार ध्यान करिए, सोचिए कि आप अभी तुरंत डिसीजन इमीडिएट क्या ले पाते हैं कि आईबी में 1 साल की जॉब हो चुकी है, आपका प्रोबेशन चल रहा है, 2 साल का प्रोबेशन होता है वहां, 1 साल हो गए हैं और आपने यूपीएससी भी क्वालिफाई कर लिया और आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है यूपीएससी का, तब आप क्या करते हैं? So if at that point of time I am satisfied with my job and I feel that I can grow faster in this field only, so basically, sir, I'll try to keep my job for longer. Why आप प्रमोशन क्यों नहीं लेना चाहेंगे? So basically, it will be a new start from IPS and new training, everything new. But here I will be assimilated already. I will be trained and I will have job for 1 year almost. Okay. So sir, I feel like that. यूपीएससी एक ऑप्शन भी देता है कि आप मेडिकल वगैरह उसमें लगा करके अपनी ट्रेनिंग को डिले कर सकते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, इस तरह का कोई चॉइस करेंगे या नहीं करेंगे? Sir, if I have to choose, then I'll choose right away. Like if I get the choice, I will choose on the point, not delay or anything. So it will not be it will be a difficult choice and it will come on late. I cannot comment it. बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई होने के बाद भी अगर पढ़ाई करते रहते हैं तो 1 साल का मेडिकल लीव ले लेते हैं, ट्रेनिंग में 1 साल देर से पहुंचते हैं और फिर अगर लगा देते हैं तो फिर उनकी ट्रेनिंग रोक दी जाती है, आगे तो मतलब डिले कर दिया जाता है, तो उनको नेक्स्ट बैच में फिर ट्रेन किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या आप लेना चाहेंगे? क्योंकि आप आईबी के लिए नहीं, आईबी में कंटिन्यू रखते थे तब मतलब मोस्ट प्रोबेबली आई विल कंटिन्यू। ओके, इसका मतलब आईबी में आने के बाद आप यूपीएससी का फॉर्म फिल करना छोड़ देंगे? Yes, sir, definitely. Form, then I'll not be filling the form. This will be my last attempt in UPSC. Oh, ठीक है। बाप में ये बताइए कि कोविड टाइम ने या फिर हमें पैंडेमिक टाइम ने क्या क्या नई नई चीजें हम लोगों को सिखाई हैं और जो कंटिन्यू करते रहना चाहिए हम लोगों को, जिससे ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमैनिटी को, एनवायरनमेंट, सब जगह हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, बताइए।
So one of the biggest benefit that COVID has given, apart from all the damages, is the benefit of hygiene. It has trained the society in being more hygienic and caring about their own health. Even for the point of government, we have developed a huge infrastructure in health suddenly, and government has understood the focus should be on health first and education. So in the education sector, we have been benefiting because of the online education that we have suddenly increased. The reach of online education has been in all the villages, in almost all the remotest villages. All we need to do is to continue the trend and develop digital services so that we can reach internet in all the places. So environmentally, I feel that we have, for the 2 years when we were on a pause, the environment was benefiting. So humans have to understand the need for being not using the environment like we were using before 2020. Okay. Now, tell me that how much it is necessary to be a nuclear state for a sovereign country. If we go with the policy of India, we are going on the way to nuclear disarmament all over the world. So if it's just a compulsion we are keeping because of our neighbor, but our main policy is we should have no nuclear weapon. It's not a safe weapon for the world and for the humanity. So as fast as possible, we should disarm all the nuclear weapons we have. Okay. और इंडिया ने जो परमाणु टेस्टिंग परीक्षण करके परमाणु संबंधता हासिल कर ली है, स्टेटहुड उसने हासिल किया है, तो ये सही किया या गलत किया? So it was a correct decision, seeing the situation that our neighbor Pakistan was also having similar weapons suddenly. So similar weapon उनके पास है, similar हमने रखी है, तो ये यूज कब किए जाएंगे? So it's basically we have used this as a deterrence. We have a no first use policy. So in चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है उसमें वन बेल्ट वन रोड्स कहां से कहां तक है और वो भारत को कैसे इफेक्ट कर रही है? So one belt one road from China has been covering all the Asia even till Europe. So it has covered a complete route like the Silk Road we had in the past, and it is passing through the POK region that we have. That's our own possession. So it's going to the territory of India even without asking India's permission. So basically it's against our sovereignty. The CPEC they are constructing China-Pakistan Economic Corridor. It's against India's sovereignty. सीपेक कॉरिडोर उन्होंने हमारे मतलब रीजन में हमारे एरिया में आके बना दिया, हम लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया कोई? So basically we could not have taken, we have raised our voice at all the platforms, but direct action we cannot take, right? क्यों? जो हमारा प्लेस है, हमारी जगह है, तो फिर हम लोगों ने क्यों डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया वहां पर? So because we believe in negotiations, we do not believe in direct wars. The area right now is not under our direct control. Why it's India, under the control of... Why India don't do these type of things? No, so it's not part of our foreign policy. It's not at all. We are following Ghanaian policy and it's not a part of our... Okay. Now, tell me the main procedure and main source of fund of LWE and many insurgent other groups. अब ढेर सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनका और LWE का जो फंड कलेक्शन करने का प्रोसीजर है, और वो अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट भी रन करते हैं. उन्होंने इस साल का बजट 1000 करोड़ का इशू किया हुआ है. तो ये इतना बड़ा अमाउंट इनके पास कैसे कलेक्ट हो पाता है? Okay. So some of the sources that I can call out, one of the sources, they are being funded by the states and the NGOs who are supported by the external states, not the part of India. Second source can be the local sources, like the revenue from the locals, from like what we call like Vasuli and Hafta. So that can be one of their sources. And so I can recall only these sources, like NGO, external, state, and this. Okay. Who are urban Naxals? So urban Naxals has been given a term to the people who live inside the India and try to change the ideologies of the people and try to radicalize the youth. Okay, so tell me some name of urban Naxals. So I cannot recall any.
Okay, Sudha Bharadwaj is an urban Naxal or not? So I cannot really not say. Who is Gautam Navlakha? Who is Varvar Rao? So I haven't heard these names yet. Oh, कि भीमा कोरेगांव जो हिंसा हुई थी वो पता है मालूम Yes, है sir. आपको? Yes, sir. तो ये Yes, sir. सारे Yes, sir. ये सारे नाम उन्हीं से जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है एनईपी 2020, ये कैसे हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रेंथ पहुंचाएगी, मजबूत करेगी? So biggest benefit that we will be getting from this is we will get a huge force of a skilled labor. So the skilled labor that we will be getting from the new education policy will be the beneficial force for all the security and intelligence forces. And secondly, so we will have trained the youth to stress and other kind of situations since the childhood, and they will be having a practical knowledge, not like the theoretical we used to have in the past. So this practical knowledge can be important for us on the security forces. So this. Okay. Recently, government has banned the porn sites. तो आप ये बताइए कि porn sites के बंद होने पर यूथ की जो वर्किंग है या फिर यूथ के जो तौर तरीके हैं उनमें आप क्या बदलाव देखते हैं? ये अच्छा निर्णय था या गलत निर्णय? So this decision can have both its pros and cons. Like if we see the pros, we cannot control child pornography or even women rape videos or other kind of harassment videos which were shown on the porn sites. So this was directly against all the human rights that the women's and the children's were facing. So this was the pro. But if we see from the negative side, it's against right to expression and right to, like, it's against the right to what the people want to watch and all. So if we stop the porn directly, the youth will find some other ways, and Okay. that can also be Okay. आपने porn sites का सहारा लिया है कभी स्ट्रेस को कम करने के लिए या फिर एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए? आपने देखा Yes, है? sir. देखा है? Yes, sir. और अब भी देखते हैं? So I cannot say I haven't been because of the ban, and it's not possible now on the telecom services. लास्ट टाइम आपने कब देखा था, कुछ याद है? कल, परसों, एक महीना पहले, 2 महीना पहले? No, sir, not like at least this month, not, तो but before. ठीक है, आप पहले क्यों देखते थे और तब क्या प्रभाव था आपके ऊपर, और अब नहीं देखते हैं तो क्या बदलाव आए आपके अंदर? So before, when I used to watch, it was like my hormones, it was the need of the body. It was like need of the mind. So basically we use, but if now I don't watch, I am not so used to it. I can control my feelings and I can do it without. Also, I can just have different things, not necessarily porn. इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितने ट्रिलियन डॉलर की है इस समय? So 2.6 something. So we have fallen from the COVID time. We were already on 2.7, but we have. और चाइना की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन डॉलर की है? So can I take a guess? Okay. So it's I'm not sure, but it's like around 14 or 15 billion. Trillion dollars. और 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? So million. ट्रिलियन. 9, 12. Sir, ओके. और इंडिया ने कितने का टारगेट रखा हुआ है कि हम कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेंगे? 5. Sir, $5 trillion economy. किस ईयर तक? So before we had the earlier target like 2024, but now we do not have a fixed target. ओके. आप ठीक से ईयर नहीं बता पा रहे हैं. चलिए, अब एक रैपिड फायर क्वेश्चन है आपके पास, आप इनको डिस्क्राइब करिएगा और 1 और 2 लाइन्स में, ठीक है? कम्युनलिज्म. Communalism is using the religion and ethnic diversity of the people to divide the people on those basis. Okay. Communism is a kind of society where all the people possess the resources together and they are paid benefits on the basis of the work done. Marxism.
So Marxism is also a kind of society where resources are completely held by the people and labor are given the equal rights according to the law. और socialism? So socialism, can I take a guess? Okay. So it's like almost same. The societies are having the equal rights, but the government works for the welfare of everyone. Like one does not possess more resources. Okay, and Maoism? So I cannot define it exactly, Maoism. Difference between Vasundhara Raje government and Ashok Gehlot government. Which government is best in point of view, in your point of view? So I cannot comment on one best government. Like both are having their, both are doing their job well. So if we just see the difference is small, they are just focus of the region where they are working. Like basically, Ashok Gehlot government focus is usually on the Jodhpur region, and Vasundhara Raje government focus is usually on the Jaipur and Saitba region. So, but the works are both are having tremendous work for the state, so we cannot judge one. So both are having a good. बट अगर हम दोनों में से एक को आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करने के लिए कहें तो आप कौन सी गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे? So it will be almost. So I cannot choose one because almost I feel both are equally. Okay, ठीक. और हम लोग आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, ठीक है? और आप हमें सिक्योरिटी स्कैन करके बताइए कितना और अब कितना बदलाव हो गया? So during those period when we were just independent, we had a Indian Army and a small Air Force and a very, very small Navy force that was given to us by the Royal Indian Navy of British. So since then, we have come a long way, and now we have a good Air Force. Okay. We have a complete naval force having indigenous supply. Okay. पेगासस के बारे में आपने सुना हुआ है? Yes, sir. बताइए. So Pegasus is a software developed by Israeli firm for having the surveillance of on the WhatsApp. It is usually given to the governments. So state. Okay. And ये किसके अगेंस्ट में यूज किया गया? पब्लिक के या फिर क्यों? So generally, recently it has been used against a lot of journalists and lot of famous personalities for the surveillance vision. तो इसको जब यूज किया गया तो उनके किस तरह के राइट का एक्सप्लॉइटेशन किया गया गवर्नमेंट की तरफ से? So it was against their right to privacy under Article 21 of the Constitution. Okay. So Supreme Court has. आप बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये काम किया है? So we cannot comment directly because the Supreme Court has also not said. Supreme Court has said that the government must not violate the right of people under Article 21, but directly we haven't get any proof. Okay. हम आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं और अगर इसको सुने पहले तो आप बता दीजिएगा हमें या फिर मेरे द्वारा अगर आपसे पूछी गई तो बता दीजिएगा. ये बहुत खूंखार आतंकवादी ग्रुप है. उसके कुछ मेंबर, सारे मेंबर अंडर कवर हैं, अंडरग्राउंड हैं. उसके कुछ मेंबर चाय वाय पीने आते हैं एक छोटी सी दुकान पे और वहां उसके आसपास आपको उनके माध्यम से इंटेल कलेक्ट करना है. ये पूछा गया आपसे कि नहीं पूछा गया अभी तक? नहीं सर. ठीक है. तो आप समझ गए हैं ये आतंकवादी बहुत ही हाई लेवल के आतंकवादी हैं, बहुत ही खूंखार हैं. मान के चलिए अलकायदा के हैं, ये टॉप लीडर्स हैं, ठीक है. और ये वहां पर कुछ अपना प्लानिंग कर रहे हैं और आपको वहां इंटेल कलेक्ट करने के लिए भेजा गया है. आपके पास 3 ऑप्शन है इंटेल कलेक्ट करने के. पहला ऑप्शन है कि वो जो 1-2 लोग आते हैं उनको अरेस्ट कर लेंगे और इंटरोगेशन के माध्यम से निकाल लेंगे. सेकंड ऑप्शन है कि आप एक भूखे नंगे भिखारी का रोल करेंगे जो एक भी कपड़ा नहीं पहनता, एकदम नंगा, और वहीं आसपास 20 दिन तक वैसे ही घूमेगा. उसके पास न खाने का न रहने का कोई सिस्टम नहीं है. आपको सर्वाइवल आपको जैसे करना है करिए वैसे. और तीसरा है आप आम पब्लिक को उन लोगों के बारे में, आतंकियों के बारे में बताकर, समझाकर
और अपने बारे में कि मैं एक अधिकारी हूँ, इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ और हमारी हेल्प करिए और इस तरह से हेल्प लेकर के करेंगे। बताइए आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहेंगे? So option one is definitely not going to work because if we arrest anyone, नहीं it नहीं, will go आप to. क्या करेंगे बस ये बताइए, आप सजेस्ट ना करिए। Sir, option two. Option two. व्हाई नॉट ऑप्शन 3? So because option three, I will violate the integrity, the information secrecy that we keep in the organization. It will go out, and I'll also risk the lives of the people because if I tell, yes. Okay, thank you and all the best for future. Okay, sir.